So this is H2M1. Now we have to start. Today we will start the remaining topics, that is types of energies. Types of energies. Okay. So energies are of following type. First one is kinetic energy. Kinetic. What is kinetic energy? Whenever whenever a block moves, it possesses energy because of motion. It will be having energy if it is moving with the speed v. So kinetic energy Ke is equals to half mv square. Correct? Clear? For SI, if you take SI, mass will be in kg and v is in meter per second. Clear? Meter per second. So as kinetic energy is half mv square, so neither mass is negative or not the v square. It can't be negative. So kinetic energy must be positive, must be greater than or equals to zero. It can't be negative. Clear? Is it clear? So you have to take following point in consideration. First one Sir, is yes, yes, sir. beta. Yes. Sir, can you explain this again? K should be greater than equal to Because 0. mass is positive, mass can't be negative, and v square is a square, so it can't be negative. Clear? Clear? Yes. Square of anything should be positive, no? Clear? So kinetic energy, first one, can't be negative. Can't be can't be negative. The second one, kinetic energy is frame dependent. Why it's frame dependent? Why it is frame dependent? Because if you look at the motion of this moving object with the frame which is also moving with the same speed, so with respect to this frame, what will be the kinetic energy of this block? Kitna आएगा? Zero. It will be half m0 square because v relative is equals to 0. Clear? So first thing, kinetic energy can't be negative. The second, frame dependent. It is frame dependent. It depends through which frame you are looking at the motion. Clear? इसको note करो. Next is potential energy. Potential energy. Second one is potential energy. So whenever we perform work against a force, it will get stored in the form of potential energy. It will get stored in the form of potential energy. For example, suppose if you are taking a box from surface to a particular height, from the surface to a particular height, this height. So you're performing the work against force of gravity. Clear? You're performing the work against force of gravity. Is it correct? Clear? So when you bring this block Yes, sir. from surface to a particular height, this height h. So you are applying the force in vertically upward direction, and what with the force of gravity, it will be downward. So actually what you are doing, you are performing the work against force of gravity. Here speed is 0, here speed is 0. So there is no kinetic energy. There is no change in kinetic energy. Okay. So in which form, whatever the work done by your side,
is stored in which form? This is stored in the form of potential energy. Which potential energy? Gravitational potential energy. Okay, so you are performing the work performed by this agent, this F force is F into my H, F into my H, and work performed by the gravity is Fg downward and displacement is upward, so it is minus Fg into my H. So whatever work you do, the work done by gravity will consume it. तो आपका एनर्जी जा कहाँ रहा है? In which direction? कहाँ जा रहा है? This is plus W and this is minus W. So what is net work? What is the net work done? It's zero, na? So negative sign क्यों? Because Fg is in downward direction. Fg is in down. देखो Fg and F both are of same magnitude. तभी तो उसको slowly move कर रहा है ना? ठीक है? हाँ सर. So Fg is in downward direction. ये Fg multiplication में नहीं है, ठीक है? G is small ना? ऐसा है, इस तरीके से साइन है बस, ठीक है? Just sign. So you're moving the box in upward direction and the gravitational forces in downward direction. So work done by gravity will be negative and work done by this force will be positive. So this force will do plus W work and the gravity will do minus W work. So where your energy is going? So your energy will be stored in the form of gravitational potential energy. So whatever the work you have performed against this force of gravity will be stored in the form of potential energy. That is equals to this work, this W, potential energy. That is equals to mgh. Is it clear? Potential energy, mgh. mg is the force, h is height. So force into displacement. This is the potential energy. Is it clear? Is it clear? W net 0 है. W net. हाँ, net work done is 0 because the work you do, that will be compensated by the force of gravity. The force of gravity will do the equal amount of work in negative. So net work done will be 0. तो फिर सर mgh कहाँ से आया? तो mgh ऐसे ही आया ना, आपने जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया that will be stored in the form of potential energy ना. अब क्या है, अब आप इस ब्लॉक को छोड़ोगे, अब आप इस ब्लॉक को जब छोड़ दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसको अगर आप रिलीज कर दो तो क्या होगा, ये नीचे आएगा हाफ mv स्क्वायर से, आया ना? हाँ सर. देखो ध्यान समझो, इसको कभी भूलोगे नहीं. सपोज ग्रेविटी यहाँ होता ही नहीं, यू कैन इमेजिन दैट इफ दैट वाज द केस दैट देयर इज नो ग्रेविटी, अगर आप सेम फोर्स लगाते तो इस मोमेंट पे उसकी स्पीड उतनी होती जब इसको छोड़ते और ये यहाँ गिरने पे होती. समझे? क्लियर है कि नहीं? समझे कि नहीं? नहीं समझ सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो? बता रहा हूं मैं. अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होता है ना, इफ Fg was not there और F आप लगाते तो यहाँ पे आते आते इसकी स्पीड इतनी हो जाती v0, जितना इसको आप जब छोड़ोगे तो यहाँ पे नीचे आने पे होगी v0. समझ गए? हाँ सर. और सर ग्रेविटी है तो whatever the work you have done on this block, that will be stored in the form of gravitational potential energy. Now when you release this box, it will come down with that kinetic energy. So when you release this block, this potential energy will get converted into kinetic energy. Clear है? इसका मतलब है आपने जो वर्क किया, that was stored in some form of energy ना. नहीं समझा? सर मतलब कि ग्रेविटी जो है वो वर्क को स्टोर करती है, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो फिर कुछ स्टोर नहीं होता. पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता. मतलब ग्रेविटी है तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी है, राइट? बिकॉज़ यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी ना, सो व्हेनेवर वी परफॉर्म वर्क अगेंस्ट अ फोर्स, इट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो यू आर परफॉर्मिंग वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सो दैट विल गेट कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. So when you release this box, it will come down to the surface and the kinetic energy will be equals to half mv0 square. Clear? So gravity is like a spring. Yeah, I will take the example of spring and electrostatic force, everything, but on the next slide. So gravity है इसलिए ऊपर velocity 0 है ना,
हाँ ग्रेविटी है और हर पॉइंट पे फोर्स Fg के बराबर है, Fg के बराबर तो इट विल मूव स्लोली ना, है कि नहीं? हाँ सर। धीरे से उठा के यहाँ पे रख दिया, अब इसको जब छोड़ोगे तो यहाँ गिरेगा, और गिरेगा तो इतनी स्पीड से गिरेगा, समझ गए? हाँ सर। If you release this box, it will come down and it will strike the surface with a speed v, with a speed v0, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? Is it clear? हाँ सर। चलो नोट कर लो। So what happens when you throw a block? When you throw a block from the ground with the speed v0, so at this moment the energy is the form of kinetic energy. So kinetic energy is equals to half mv0 square, and potential energy is equals to 0. So at the highest point it will go up to the highest point, and at the highest point it will get a stop. So kinetic energy is equals to v is equals to 0, kinetic energy is equals to 0, and potential energy is equals to mgh. Clear? And when it will come down, then what will happen? This potential energy will get converted into kinetic energy. Now is it clear? Is it clear? Now the kinetic energy is equals to half mv0 square, and potential energy is equals to 0. So there is a oscillation of energy. At t0 the energy was in the form of kinetic energy. At the maximum height the kinetic energy is 0, and entire energy is get converted into potential energy. And when the block strike the ground, the entire potential energy will get converted into kinetic energy. Is it clear now? Sir, it's symmetric, no? Yeah, it's symmetric. It's symmetric. Next is this is the gravitation. Yes, beta. So kinetic energy is when the object starts coming down, when it is on the way. So kinetic energy will be half mv square and t will be 0, right? At the highest point or at the No, lowest? while coming down, when it's middle of the way. In the middle of the way, the potential energy will decrease and the kinetic energy will increase. So some amount of energy will be in the form of potential energy, and some amount will be in the form of kinetic energy. Okay. ठीक है? चलो. So types of potential energies. So first one is gravitational potential energy. That is equals to mgh. ठीक है? U is equals to mgh. Second is spring potential energy. U is equals to, so when you perform work against spring kx dot tx, you have to integrate, you will get half kx square. When you integrate this term, you will get half kx square. This is a spring potential energy, because the spring forces, when you perform some work against a spring force, so spring force is F equals to kx na. So when you do some work, when you displace it by a distance tx, what will be W? It will be half kx square na. Clear? आया ना? x dot dx, x square by 2, correct है कि नहीं है? हाँ सर. चलो. And some other form of potential energy will be there, like electrostatic potential energy. You will study this term in the 12th class. Electrostatic potential energy. You will study this term in your 12th class. Okay. These two terms you have to study in your 11th class. Clear? So there are certain type of potential energy. The first is gravitation, the second is spring, the third is electrostatic, the fourth is magnetic, fifth is nucleus, है ना? वो नहीं. We just need to take care of these two type of energies: gravitational potential energy and spring potential. Clear? Is it clear? So whenever you press a spring or elongate a spring, whenever you compress it or elongate the spring, the work done by external agent will be stored in the form of spring potential energy. बचपन में आपने टॉय चलाया होगा ना, ये वाला, जिसको पीछे खींचो फिर वो आगे जाता था,
स्प्रिंग बेस होता था, चला है कि नहीं चला है? चला है। हाँ सर। तो उसमें क्या होता है, वट एवर द वर्क यू डू वो स्टोर हो जाता है स्प्रिंग में, और उसके बाद व्हेन यू रिलीज दैट वर्क विल गेट कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो बिल्कुल फील लेना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो नोट कर लो। The third is total energy. Total energy. Total energy. Just a minute. This is the sum of entire system. Total energy. Total energy. Or we call it mechanical energy. Mechanical energy. So for a system, this is the sum of kinetic energy and potential energy, total energy, kinetic energy and potential energy. Clear? This is called total energy. So for example, when you throw a block or ball with the speed v naught, so initially the entire energy will be in the form of kinetic energy. At highest point, the entire energy will be in the form of potential energy, and again at the lowest point, the entire energy will be in the form of kinetic energy. Clear? But throughout the motion, total energy of the system will remain unchanged. Clear? Why? Because TE is equals to KE plus PE. When KE increases, then PE will decrease, and when KE will decrease, the PE will increase. Vice versa. Okay, but total energy will remain same. Is it clear? Clear है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलो नोट कर लो। Noted? हो गया, चलो. So total energy will only change if there is some external force, if there is some other than gravity. Because why gravity? Because we are taking the potential energy in the consideration. If there is some other than this gravitational force, if there is some extra force, then that will change the total energy of the system. Clear? That can change the potential energy of the system. Only external force can change total energy of system. So you can ask, sir, gravitational force is also an external force, so why we are not taking that force? Actually we are taking that force, that's why we are taking the potential energy concept. Okay, we are taking the gravitational force, that's why we have introduced this potential energy. Okay, other than gravitational force, if there is any other force, so that will definitely change the total energy of the system. Clear? Is it clear? हाँ सर। For example, in case of explosion, when the bomb explode, so it will explode in two or more than two parts. Okay, m1, m2 masses. So what is happening here? Which energy is going in the form of kinetic energy? Which energy? When the bomb explodes, what's happening here? Actually, the bomb is made of some chemical or some explosive. So when the reaction goes, the potential energy of the system will decrease, and it will get converted into kinetic energy. Clear? But the total energy of the system will remain unchanged. समझ में आया कि नहीं आया? Is it clear? Because during explosion, the bomb, these part will impart internal force on each other. When you take the forces they are applying on each other, it will be internal force. Is it clear? So the potential energy of the bomb decreases. Yeah, potential energy, or not the gravitational potential energy. This is different type of potential energy. This is the chemical potential energy,
or it may be nuclear potential energy, it may be any other kind of potential energy. We are not taking a gravitational potential energy, we are taking the type of potential energy stored in this box. Okay, if this bomb is made up of chemical, so that will be a chemical potential energy. If bomb is made of nuclear bomb, so that will be the case of nuclear potential energy. So that potential energy will decrease, and the same amount of energy will get converted into kinetic energy, and plus some amount in kind of in heat and sound. Okay, मतलब the gravitational energy will be conserved. total energy will be conserved. Yeah, total energy will remain unchanged. सर तो उसकी Gravitational potential energy energy is required for the three body parts. because it's necessary for potential energy, right? एक मिनट, अब बोलो, फिर से बोलो. Gravitational force is required because I mean a potential energy depends on it, right? No. This is not the gravitational potential energy. This is some other. No. I'm talking about in general for a for throwing a ball out. If you're taking gravitational potential energy, or you're taking this potential energy to be different from the gravitational potential energy. You're taking the same I'm potential talking energy. about gravitational potential energy. There we're taking gravity as a force because potential energy there depends on it. Gravitational potential energy depends on the force of gravity, but this type of potential energy, like chemical or nuclear, that doesn't depend on gravity. They're independent of it. Yeah, that is independent of it. Okay, sir. Okay. देखो, what is potential energy actually? What is actually potential energy? Suppose you are having so much potential to score high marks in your exam. ठीक है, आपके अंदर potential बहुत है, लेकिन आप उसे रिलीज नहीं कर पा रहे. If you are not able to release in the form of marks या किसी भी of energy, मतलब kind of वही output है. So that is the potential energy that is stored in your body. समझ में आया कि नहीं? What is potential energy? The energy right now stored in our body, that is the potential energy. That is not the exactly the gravitational potential energy, but that is some kind of energy. मैंने क्या लिखा है? तो some kind of energy which is stored in the body, है ना? Stored in the body. It will get stored in the form of potential energy. Any form of energy will get stored in the form of potential energy. So when you eat, what happens? Mitochondria होता है ना, where energy produces, है ना, cell में, ठीक है? So that food energy will get converted into the energy, and it will get stored in our body. So that stored energy is the potential energy. Now you can use that energy in any form. अब क्या होगा? When you start running, you will be using that potential energy into kinetic energy. समझ में आया कि नहीं आया? आप समझा? हाँ सर, समझा. आप क्लियर है? So potential energy is not always the case of gravitational potential energy. It can be anything. समझ में आया कि नहीं? जैसे for example, Yes, if you're burning wood, है ना, तो क्या हो रहा है? That potential energy, है ना, जो भी उसमें combustion है, ठीक है, जो हो रहा है, that is because of fuel जो है burn हो रहा है, that will get converted into heat and light. समझ में आया कि नहीं आया? So that is also a form of potential energy. ठीक है? If you are burning the पेट्रोल ले लो, you take the example of petrol, तो क्या हो रहा है? You're burning the fuel, so आपका क्या हो रहा है? Chemical energy जो आपका burning हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? That potential energy is getting converted into heat and light, है ना, इस तरीके से. समझा? Yes. ठीक है. Sir, Yes. so when this bomb will explode, इसका जो potential energy होगा, it will be divided in three parts, as M1, M2, and some extra energy which is like released in the form of heat and light. For case of explosion, na? Huh? You're taking the case of explosion. Yes. In case of explosion, the potential energy of the bomb will get converted into kinetic energy, plus some amount in form of light, some amount in form of sound. So इस तरीके से there will be the distribution. Clear? Like two parts हो गए इसके M1 M2, तो half उसमें भी जाएगा ना? हाफ नहीं है बेटा, वो एक कैलकुलेशन से आता है. हाफ नहीं होता है हमेशा. हाँ, मतलब कुछ पार्ट. कुछ पार्ट, हाँ, कुछ पार्ट. And sir, one more question. When a body is like stationary on the ground, so उसका kinetic energy तो obviously zero होगा, but potential energy will be equal to the gravitational potential energy, right? उस समय उसका हाइट क्या, उस पर डिपेंड करता है. It depends on the height of the body. ठीक है? At the surface, we take gravitational potential energy equals to 0. ठीक है? चलो आगे बढ़े. समझ में आ गया?
Now next is equilibrium. Why zero gravitational potential energy? Yes बेटा. So zero क्यों लेते हैं हम लोग stationary object? Surface को we take as a reference point. We take as a reference point. है ना? That's why we take it 0. ठीक है? But you can take any reference point as a zero potential. Zero potential का reference point you can take any point. है ना? जब gravitation पढ़ेंगे तब आपको potential energy of gravity वो अच्छे से clear होगा. ठीक है? Is it clear? Yes. चलो. What is equilibrium? What is equilibrium? क्या होता है बताओ? There are two type of equilibrium ना. One is translational. One is translational. And the second is rotational. बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर. सर ये स्टैटिक एंड डायनेमिक होता है ना? क्या स्टैटिक एंड डायनेमिक? हाँ सर. क्या फ्रिक्शन को मिक्स कर रहे हो क्या यहाँ पे? नहीं, because last year we learned that static equilibrium is where when a body is stationary and many forces act on it, it remains in its state of rest. But dynamic equilibrium is where when a body is moving, either rotational or translational, and many forces act on it, but it maintains its state of motion, like either translation or rotation. हाँ. The purpose of equilibrium is just to maintain F net 0 and torque net 0. ठीक है? Doesn't Yes. matter the object is moving or not. वो यही बताएगा the state of the object will not change. बस यही equilibrium का. ठीक है? So translation में क्या होगा? F net will be equals to 0. Net force will be equals to 0. And in case of rotation, net torque is equals to 0. Net torque है ना? ठीक है? Net torque. This is the torque. Clear? But in right now we are having अभी हमारे में क्या है सिर्फ F net का ही लेना है. ठीक है? F net का ही लेना है. But when you correlate circular और translation तो आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ता. You can if you are able to correlate तो बड़ा आसानी हो जाता है. ठीक है? तो देखो एक रिलेशन होता है U is equals to my यहाँ पे इसे देख लो. एक रिलेशन होता है F is equals to minus du by dr. du by dr. dr is the length. dr is the length है ना? This is the dr. This is dr. And torque is equals to minus du by d theta. This is the formula. ये आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है? We have to learn this formula. That force is equals to minus du by dr and torque is equals to minus du by d theta. What is du? What is du? Change in Potential. potential energy. U is the sign of potential energy. U क्या है? U is potential energy. Clear? You have to learn this formula. If expression of potential energy is given, you can find out force F is equals to minus du by dr. Clear? And torque is equals to minus du by d theta. Is it clear? Clear है कि नहीं? हाँ सर. चलो. Now look at the following figure. इस पे देखो. बड़े आराम से आएगा समझ में. मजे से आएगा. देखो इधर. Is any angle, right? हाँ. Is any angle, right? Yeah, d theta is the angle. This is the potential energy versus r graph. Potential energy versus r graph. R is the length. Okay. So there will be three type of equilibrium. Unstable equilibrium, but it is like equilibrium. It is an equilibrium. The second will be stable equilibrium, and the third one is neutral. ठीक है? Just tell me which equilibrium is stable and which is unstable. अब ये बताओ, if you put a ball, इन तीनों जगह पे if you put a ball, तो तीनों पे it will remains at rest, हाँ या ना? बोलो. At all the three position it will remain at rest. सही है कि नहीं? अगर उसे छेड़ेंगे नहीं तो बोलो. सर वो U पोटेंशियल एनर्जी है ना? हाँ, U पोटेंशियल एनर्जी है. अगर यहाँ पे बॉल को रखेंगे तो तीनों पॉइंट पे इट विल रिमेन एट रेस्ट, हाँ या ना? बोलो. Yes, sir. What is the condition of equilibrium? F net is equals to 0. So that means minus du by dr, that is equals to minus slope, should be equals to 0.
सो जहां जहां पे स्लोप विल बी जीरो, दैट विल बी द केस ऑफ इक्विलिब्रियम हाई है ना. सो ऑल ऑफ देम आर इक्विलिब्रियम है कि नहीं है बताओ? तीनों इक्विलिब्रियम है. हाँ सर. स्लोप इज हाँ जीरो, सर. स्लोप इज जीरो, सो ऑल ऑफ देम आर इक्विलिब्रियम है ना, ऑल ऑफ देम आर इक्विलिब्रियम. अब ये बताओ which will be stable, which will be unstable and which will be neutral. So if you displace this ball, what will happen? गिर जाएगा ना इधर उधर, हाँ या ना? Yes, sir. Yes sir. So the first one is unstable. This is the first one, unstable. Clear? In the case of second, what will happen if you displace the ball? It will oscillate and come back to the original point, है ना. So this is the case of stable equilibrium. Clear है? Is it clear? Yes, sir. And the third one, in the case of third one, this will be neutral, है ना. कहीं पे भी रख दो वो कहेगा ठीक है, कहीं पे भी रख दो, कोई फोर्स ही नहीं रख रहा है. This is neutral. मार्किंग मैंने ऐसे ही करी हुई है, देखो, unstable, stable, neutral. Clear? सर सेकंड वाला इसलिए ना कि ऊपर डालेंगे तो नीचे आ जाएगा. हाँ वापस आएगा ना, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करते करते वापस आ जाएगा ना. क्लियर है? Sir, can you once again explain? Third one will be neutral. इट इज न्यूट्रल बिकॉज देयर इज नो फोर्स, है ना. आप इसको बॉल को कहीं पे भी लेके जाओ, क्या हो जाएगा, ऐसे से जाता रहे. एक मिनट. सर आगे जाके वो लाइक फॉल कर सकता है ना 2 के पास लेफ्ट में. नहीं फॉल इतना थोड़ा बहुत देखते हैं, थोड़ी ना पूरा चक्कर काट ले दुनिया के, थोड़ा सा ऑसलेट करा के देखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ऐसे ही रहेगा ना, है कि नहीं. ठीक है. बट ये वाला जो है दिस वन, ये ऐसे से जाएगा ना. सो दिस इज स्टेबल, दिस वन इज स्टेबल. और ये वाला क्या होगा, ये तो गिर जाएगा, तो दिस इज अनस्टेबल. क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो. Yes, sir. Now So can you explain why the second one is stable? why the second one is stable? Yes, sir. बेटा ये तो वापस आ जाएगा ना, ऐसे जाएगा फिर वापस आ जाएगा, तो इसी के अबाउट ऐसे घूमता रहेगा, है ना. स्टेबल है ना. Okay, sir. ठीक है. क्लियर है? इज इट So क्लियर? what is the difference between stable and neutral equilibrium? न्यूट्रल में इट विल नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट. अगर आपने इसको आगे किया तो आगे आ जाएगा, यहाँ किया तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं पे भी रख दो वहीं रहेगा. ठीक है. बट इन केस ऑफ स्टेबल इट विल कम बैक. समझ गए? हाँ sir. ठीक है. चलो, तो अब ये बताओ व्हाई दिस इज हैपनिंग. देखो इसमें क्यों ऐसा हो रहा है. इफ यू लुक एट द फॉर्मूला f इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी आर, तो बताओ इन दिस डायरेक्शन, अरे यार ये क्या हो गया, यहाँ पे स्लोप कैसा है, इज इट अ पॉजिटिव स्लोप और अ नेगेटिव स्लोप, बताओ. Negative. वाह बहुत अच्छे. तो कहाँ? दिस स्लोप इज पॉजिटिव, दिस स्लोप इज जीरो एंड दिस स्लोप इज नेगेटिव. कुछ याद आया पिछले जन्म का? कुछ याद सर आया? आप कहाँ का पूछ रहे थे? ये वाला दिस पॉजिटिव. इज पॉजिटिव ना, पॉजिटिव है. and f is equals to minus negative of slope. So by default this direction will be taken as positive and this direction will be taken as negative. So if f is coming positive, so that means it is acting in the right direction. If it is coming negative, so that means it is acting in left direction. So this is the positive slope, and f is negative of slope. So what will be the direction of f? Is it positive or negative? The slope is positive, so f will be negative. So what will be the direction of f? This one. Minus. Clear? And for the negative slope, negative, positive, what will be the direction of force? This one. So that's why when you displace this ball, this force will pull the ball, and if you displace the ball in the left direction, this force will pull the ball. So that's why it is in a state of unstable equilibrium. समझ में आया कि नहीं आया? Is it clear? Yes. So left side force act करेगा, so it will be positive or negative. लेफ्ट वाला तो लेफ्ट में खींच रहा है, राइट वाला राइट में खींच रहा है, और क्या. नहीं बट सर आप राइट कॉर्नर में पॉजिटिव नेगेटिव एरो डाल के बता रहे थे ना कि
बेटा Just मैंने said बताया collapse of द the स्लोप इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्लोप का नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला फोर्स कहाँ बनेगा? लेफ्ट में। आया ना? ठीक है, यहाँ पे स्लोप इज नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, तो स्लोप फोर्स कहाँ बनेगा? राइट में। क्लियर? क्लियर? इज इट क्लियर? सर और फिर उसके बाद आपने कहा था कि इसलिए वो अनस्टेबल है, तो आप वापस बता सकते हो? बेटा इस बॉल को राइट में करोगे तो ये खींच लेगा, लेफ्ट में करोगे तो ये खींच लेगा, तो अनस्टेबल हुआ ना? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? ये मत बोलना प्लीज एक्सप्लेन अगेन फ्रॉम बिगिनिंग, ऐसा मत करना, सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा। अभी नहीं आया तो पूछ लो, जल्दी बताओ, कुछ पूछना है? चलो सर स्टेबल वाला एक बार। हाँ, इस पे आ रहा है बेटा, वी आर कमिंग। सो दिस स्लोप इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव, सो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पे स्लोप इज नेगेटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव, तो यहाँ पे ऐसा है, इधर जाओगे तो ये पुश कर देगा, इधर जाओगे तो ये पुश कर देगा, तो वापस ले आएंगे ना ये लोग मिलके। आया ना? हाँ सर। आप समझा? बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, देयर इज नो फोर्स, है ना? स्लोप इज जीरो, सो एफ इज जीरो, सो दैट्स व्हाई इट्स न्यूट्रल। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, सो अब समझ में आ गया विच केस विल बी स्टेबल एंड विच विल बी अनस्टेबल। हाँ सर। एक तो बॉल को रख के ही बता सकते हो। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? एट इक्विलिब्रियम du by dr जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन तो होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे। फिर स्टेबल में ऐसा रहेगा, अनस्टेबल में ऐसा रहेगा, न्यूट्रल में ऐसा रहेगा। ठीक है, क्लियर है? ड्रॉ कर लो इसे। वर्क एनर्जी थ्योरम, नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी सिंपल, वर्क एनर्जी थ्योरम। जस्ट सिंपल स्टेटमेंट, लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा है, ध्यान से समझना। The work done by all the internal and external, both forces included, and external force is equal to change in kinetic energy of system। ठीक है, सो नेट वर्क डन बाय ऑल द इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस जितने भी प्रेजेंट हैं, दैट इज इक्वल्स टू द नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो W net is equals to delta K, whatever the change in kinetic energy is there, that is the entire net work done by all the forces, including all the forces। that is the statement of work energy theorem। ठीक है, अब कैसे इसको समझेंगे, देखो, if you take the example of यही वाला बॉक्स वाला, if you bring the box at a particular height, इसे particular height पे रखें, so what's happening, देखो ध्यान से, the motion is started from rest and finally it ends at rest। हाँ कि नहीं? बोलो, सही है? Is it clear? बोलो, क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो। हाँ सर। So initial kinetic energy is zero and final kinetic energy is also zero। So what is delta K? Delta K in this case, that is zero, na? So actually what's happening? You are applying the force F upward and the force of gravity is acting downward, Fg, that is equals to mg। So the work done by this capital F, this is the height h, so work done by this force is equals to F into my h, that is equals to plus W, and work done by the force of gravity is minus Fh, that is equals to minus W। So what is the net work done? That is equals to zero, na? Plus W minus W, clear है कि नहीं? Yes, sir. So that's why kinetic energy change is also zero। Is it clear? यही स्टेटमेंट बस इसका।
वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट सिंपल, द नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, नेट वर्क डन लिख लो, नेट वर्क डन, द नेट वर्क डन, द नेट work done by all internal and external forces is equal to change in kinetic energy of the system. If kinetic energy of system is not changing, so that means the net work done by all the forces is equals to zero. Although this work is storing in the form of kinetic potential energy, but kinetic energy change is equals to zero. Clear है कि नहीं? Is it clear? समझ में आया? Clear है? चलो नोट कर लो. चलो. So next topic is, अगला टॉपिक है आपका आफ्टर वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क बाय ग्रेविटी, वर्क बाय फ्रिक्शन, वर्क बाय ग्रेविटेशन. ओके. नाउ वी विल टेक द एग्जांपल. यहीं पे मैं थोड़ा सा सीक्वेंस आई विल चेंज. What are conservative forces and what are non-conservative forces? Conservative and non-conservative forces. ठीक है? तो first one is conservative. What are the conservative forces? Conservative forces. What are the conservative forces? क्या होते हैं? The forces whose work done is independent या सबसे सिंपल लैंग्वेज लिख लो, द फोर्सेस इन विच एनर्जी रिमेन्स कंजर्व. कंजर्व तो हमेशा ही रहती है एनर्जी, बट इसमें हीट या लीकेज नहीं होती है. कंजर्व मतलब कि नो लीकेज. कुछ इसके पॉइंट्स होते हैं लाइक वर्क डन इज इंडिपेंडेंट on path taken. ठीक है? For example, gravity. If you take this block, whether you take by this path or you take this block by the straight path, बताओ, the same amount of work will be there ना? Same amount of work कितना होगा? Loss of potential will be mgh ना? Whether you take path 1 or path 2, बताओ, is it dependent on path or is it dependent on the displacement? किस पे डिपेंड करेगा? Displacement. Whether you take path 1 or path 2, the work done will be same. So whether you take path 1 or path 2, that is independent of क्या? Path taken. Okay. So work done is independent on path taken. Independent of path taken. ठीक है? Work done depends on initial and final points. Yes बेटा, कोई डाउट था? किसी को कुछ पूछना था? हाँ sir, wanted to ask that sir, first part में distance ज़्यादा है ना? Doesn't matter. आपका potential energy का drop कितना होगा ये बताओ. Potential energy का drop. What will be the work done by the gravity? That will be the loss of potential energy ना, जितना हो रहा है. Yes sir. पाथ आप कैसा भी लो, चाहे आप सीधे लेके जाओ, सेम वर्क होगा. ठीक है? हाँ सर, समझा. Work done depends on initial and final points. देखो, it depends on initial and final point, not on the path taken. ठीक है? एक और चीज होती है net work done on a
complete loop is 0. For example, if you take this m mass in a complete loop, what will happen? What will be the net work done by the gravity? When the object is coming down, the work done will be positive, and when the object is going back to the initial position, the work done will be negative. So what will be the net work done? It will be 0 na, by gravity. बताओ हाँ या ना? ठीक है. So whenever you perform a work on a complete loop, the net work done will be 0. These are the properties of conservative forces. हाँ बोलो बेटा. So could you please repeat about what you said about the two stones being thrown up and down? This one. Yeah, sir. When the object is coming down, the work done by the gravity will be positive. Work done by gravity will be positive because the force is in downward direction, displacement is in downward direction. And when the object is going upward, the work done by the gravity will be negative. Okay, so net work done will be equals to plus Wg minus Wg. Net work done will be equals to 0. Clear? So in case of conservative force, whenever you complete a loop, the net work done will be 0. समझ में आया कि नहीं आया? There will be no loss of energy. The energy will get converted into kinetic and then kinetic into potential. So this is the best example of conservative force. So what are the example of conservative forces? Gravitational force, Coulombic electrostatic force, है ना, इस तरीके से. तो आगे अभी मैं बता दूंगा कि what are the examples of conservative forces. But net work done on a complete loop is 0. Other than this, no heat, no dissipation or leakage of energy in form of heat. Light or sound. Why we take them as a dissipative energy? मतलब कि जो leakage है. Why we take them as a leakage? Because whatever the energy is leaking in the form of heat, light or sound, you can't bring them back. आप उनको वापस नहीं ला सकते. एक बार सिस्टम से एनर्जी हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में निकल गया तो आप उसको वापस नहीं ला सकते. ठीक है. तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ही यही होता है कि जो भी आप वर्क कर रहे हो वो आपको वापस मिल जाए. ठीक है. सो इफ देयर इज एनी लीकेज, कोई भी हीट डेवलपमेंट हो रहा है, एनी फ्रिक्शन इज देयर, सो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. समझ में आया कि नहीं आया? समझे? क्लियर है? बोलो. हाँ सर. चलो इसे नोट करो. चलो नेक्स्ट. Now we will take the example of conservative force. Examples. What are the examples of conservative forces? The first and the best example is force of gravity. That is the best example of conservative force. The second is Coulombic electric field. Why I am writing Coulombic field? Because there is another electric field in electromagnetic induction. EMI में पढ़ोगे in your 12th class, अभी नहीं. That is non-conservative है ना, Coulombic electric है ना, और field. That is also conservative है ना. ठीक है. Clear है कि नहीं? Next is non-conservative. दूसरा वाला क्या है? Non-conservative. ठीक है. The second one is non-conservative. Non-conservative forces. इसमें क्या होता है? in which energy is not conserved during work, or there must be some leakage of energy that you can't bring back. Okay, आप कंजर्वेटिव फोर्सेस वाले को तो ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हो बिकॉज यू कैन ब्रिंग बैक, है ना. देयर इज नो लीकेज ऑफ एनर्जी.
बट यू कांट ब्रिंग बैक नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन जो भी होगा इसको आप ओरिजिनल स्टेट में यू कांट नेवर ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल स्टेट बिकॉज देयर मस्ट बी सम लॉस ऑफ एनर्जी, देयर मस्ट बी सम लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, साउंड और लाइट. ठीक है. इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिसिपेटिव फोर्सेस होते हैं, डिसिपेटिव फोर्सेस. सो दैट मीन एनर्जी लीक. ठीक है. किस फॉर्म में? हीट, लाइट और साउंड. क्लियर? वर्क डन. डिसिपेटिव फोर्स मतलब? डिसिपेटिव का मतलब है जिसमें एनर्जी मतलब कि लॉस हो, कुछ लॉस हो, है ना, सिस्टम से चीज निकल जाए, वापस ना आए. ठीक है. डिसिपेटिव मतलब एनर्जी खर्च करने वाले, जो एनर्जी को खर्च कर देते हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पे क्या एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एनर्जी इज गोइंग इनटू काइनेटिक और काइनेटिक ग्रेविटेशन, उसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक देन काइनेटिक पोटेंशियल में, तो यहाँ पे खर्च नहीं हो रही. टोटल एनर्जी इज कंजर्व, है ना. इसमें क्या है, टोटल एनर्जी इज नॉट कंजर्व, टोटल एनर्जी इज डिक्रीजिंग. ठीक है. समझा कि नहीं? क्लियर? इसमें आप ये भी लिख सकते हो, इसमें क्या रहता है, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती है इन केस ऑफ कंजर्वेटिव वाले. ठीक है. चेंज नहीं होती है. ठीक है. इसमें क्या होता है, लॉस इन टोटल एनर्जी, लॉस इन टी, मतलब वो एनर्जी का सिस्टम में लॉस कर देंगे. ठीक है. देन वर्क डन in a loop is non-zero. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, फ्रिक्शन. यू स्लाइडिंग ए बॉक्स ऑन अ रफ सरफेस. बताओ, लेके गए वापस लाए, बताओ, लेके गए फिर वापस लाए, मेहनत लगी, थके, हाँ कि नहीं? जीरो स्पीड से चलाया वापस जीरो पे लाया, लेकिन फ्रिक्शन है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना. फ्रिक्शन. आपको मेहनत तो लगी ना स्लाइड करने में, लगी कि नहीं? वो मेहनत कहाँ जा रही है? हीट के फॉर्म में. किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में. समझ में आया कि नहीं आया? तो कंप्लीट लूप में अगर आप आओगे, सो नेट वर्क डन विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो. इज इट क्लियर? क्लियर है? हाँ सर. ठीक है. एग्जाम्पल क्या आएगा इसका? बेस्ट एग्जाम्पल, व्हाट विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल? क्या होगा? फ्रिक्शन, है ना. फ्रिक्शन फोर्स. कौन सा वाला? काइनेटिक वाला. व्हाई नॉट स्टैटिक? स्टैटिक क्यों नहीं? व्हाई नॉट स्टैटिक? कोई बताएगा स्टैटिक क्यों नहीं लिया मैंने? बिकॉज इन केस ऑफ स्टैटिक वाले में स्लिपिंग नहीं होती है जब तक कि रब नहीं करेगा, एक दूसरे पे स्किड नहीं करेगा, देयर विल बी नो हीट डेवलपमेंट. क्लियर है? समझ में आया? सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? स्टैटिक वाले में देयर विल बी नो स्लिपिंग. अगर स्लिपिंग नहीं होगा तो हीट कहां से होगा? हीट तो स्लिपिंग होती तभी होता है ना. हाँ सर. ठीक है. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन. वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन. जो आपने पाथ लिया है उस पे दैट विल डिपेंड. वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ टेकन. ये याद रखिएगा. क्यों? द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन यू स्लाइड अ ब्लॉक दैट डिपेंड्स solely on the path taken. If you take straight path वो अलग होगा, आपने कर्वी ले लिया, ठीक है, कैसा भी है, that depends on the length covered, है ना. It depends on the length covered. Clear है कि नहीं? So work done depends on path taken. So that is the difference between conservative and non-conservative force. समझ में आया कि नहीं आया? Is it clear? समझ में आया? हाँ सर. तो आज यही रखेंगे थ्योरी.